Good morning, students. Welcome to our VVPS e-learning classes. Today we are going to revise exponents. First, laws of exponents. First law, x to the power m into x to the power n equal to x to the power m plus n. Second law, x to the power m divided by x to the power n equal to x to the power m minus n. Third, x to the power m whole to the power n equal to x to the power m into n. Fourth, x to the power m upon y to the power m equal to x upon y whole to the power m. यहाँ पर दोनों का पावर सेम है तो ये पावर को हम अलग से लिख सकते हैं. फिफ्थ, x to the power m into y to the power m equal to x into y whole to the power m. Sixth, x to the power minus m equal to 1 upon x to the power m. इफ पावर इज नेगेटिव उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे. सेवेंथ, एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. बेस कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, इफ द पावर इज 0 आंसर ऑलवेज रिमेन 1. तो ये 7 लॉज मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं. दिस लॉज शुड बी रिमेम्बर्ड बाय यू. नाउ वी आर रिवाइजिंग दिस लॉज विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस. Let's start the questions. First question. Simplification. K to the power p minus q into k to the power q minus r into k to the power r minus p. So among the 7 law, which law we are going to use? We are going to use the first law because the base are same. The base are k here and the sign is multiplication, which means we should add the powers. So k to the power, the powers are p minus q, second power, q minus r, third, r minus p. All the powers get added. Now, we are calculating the powers. p minus p, that is 0, minus q plus q, that is 0, minus r plus r, that is also 0. So when we cancel all the things, the power is 0. Now by the 7th law, anything to the power 0 is equal to 1. So 1 is our answer. Now the second question. 7 to the power 8 into 12 to the power 8. 7 to the power 8 into 12 to the power 8, दोनों का पावर 8 है. तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को एक साथ लिख के पावर 8 लिख सकते हैं by 5th law. So 7 into 12 to the power 8 divided by this law, सेम जैसे हमने पहले किया वैसे ही, 14 into 6 पावर 8. डिवाइड साइन है, that means upon 7 into 12 power 8, 14 into 6 power 8. So by the 4th law, बेस को हम एक साथ लिख के उसका पावर 8 कर सकते हैं because both have power 8. So the base become 7 into 12 upon 14 into 6. यहाँ पर बेस को हम कैलकुलेट करेंगे. 6 1 is 6, 6 2 is 12, 7 1 is 7, 7 2 is 12, 2 2 get cancelled. तो यहाँ पर कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है मतलब 1 इज देयर. सो 1 टू द पावर 8, 1 टू द पावर 8 दैट इज इक्वल टू 1. ये सबको समझ में आया. 1 टू द पावर 8 क्यों 1 क्यों 8 नहीं है. 1 टू द पावर 8 मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग 1 8 टाइम्स. 8 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार भी मल्टीप्लाई करें आंसर 8 कभी नहीं होगा, आंसर 1 ही होगा. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. वन इक्वेशन इज गिवन, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. द इक्वेशन इज 7 टू द पावर 2p डिवाइडेड बाय 343 इक्वल टू 1. सो फर्स्ट 343 इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फाइंड करेंगे ये किसका पावर है. 7 Is it clear to everyone?
So we can write 343 as 7 to the power 3. So we can write 343 as 7 to the power 3. 7 to the power 2p divided by 7 to the power 3 equal to 1. Divide sign, that means second law. So powers get subtracted. 2p minus 3, that is equal to 1. 1 means x to the power 0. किसी का भी power 0 है, मुझे 7 ज़रूरत है. So we are writing here 7 to the power 0. हमने 7 ही क्यों लिखा? Because in a previous class I told you if x to the power m equal to x to the power n, which means m equal to n. ये हमने previous class में एक property बताए थे. तो 7 to the power something equal to 7 to the power anything अगर होता तो ही हम एक p का equation form कर सकते थे. That's why we are writing 7 to the power 0 in the place of 1. Now here base are same, we are using this property, so we can write down 2p minus 3 equal to 0. While we are solving this, we will have 2p is equal to 3, which means p is equal to 3 by 2. So the value of p is equal to 3 by 2. So I think it is clear to everyone. Again, I told you, learn all these laws. Thank you, class.